मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर। दोनों के एक एक नाम भी होते हैं। न्यूक्लियन नंबर को हम मास नंबर भी कहते हैं, और प्रोटॉन नंबर को हम एक और नाम देते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं, विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन नंबर क्या होता है? इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। न्यूक्लियर नंबर क्या है? इट्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। प्रोटॉन नंबर is also known as atomic number, while nucleon number is also known as the mass number. न्यूक्लियन नंबर का क्या मतलब? mass number। और mass number का मतलब है that protons and neutrons combined make up the mass, or you can also call it the nucleon. In a neutron atom, the total number of protons equals to the total number of electrons. एक जो फर्क हम बहुत मेनली पढ़ते हैं, that what is the main difference between an atom and an ion? In an atom, the protons are always equal to the electrons, but in an ion, हम ion की बात करते हैं, protons are not equal to electrons. electrons हमेशा ज्यादा या कम होंगे प्रोटॉन से। इस फॉर्म को एक और नाम में दिया जाता है, which is the scientific notation. How do we display an element? By writing its scientific notation. अब साइंटिफिक नोटेशन ऑफ कैल्शियम को देख के हमें ये पता लग रहा है दैट नीचे आपको दिया होता है दी प्रोटॉन नंबर, या हम इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, वी रिप्रेजेंटेड बाय जी। अबव यू आर गिवन दी मास नंबर, और व्हाट वी आल्सो कॉल एज द न्यूक्लियन नंबर। तो अगर मैं कहूँ हाउ डू वी कैलकुलेट द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आप निकालेंगे मास माइनस प्रोटॉन्स, विच मीन्स 40 minus 20। तो न्यूट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स जितने ही हैं, न्यूट्रॉन्स वुड आल्सो बी 20, same as protons. So protons of calcium are 20, electrons of calcium are 20, neutrons of calcium are also 20, nucleon number is 40, the mass number is 40। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। So when an atom gains or loses electrons, cation or anion will be formed। जब गेन करता है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब लूज करता है इट हैज ए पॉजिटिव चार्ज। तो cation क्या होता है? Is a positively charged ion. It is formed when an atom loses electrons. In cations, the number of protons is more than the number of electrons. तो cation में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, दे वुड बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन्स। अगर कैल्शियम है, अब कैल्शियम के प्रोटॉन्स अगर 20 हैं, इट विल लूज मोस्टली मेटल्स आर कैटायंस। ज्यादातर जो कैटायंस होते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो द प्रोटॉन्स ऑफ कैल्शियम वुड बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन्स। जो एनायन होते हैं, they are all negatively charged ion. It is formed when an atom gains electrons. So in an anion, the number of electrons is more than the number of protons. यहाँ पे क्या होगा? Protons less है, electrons ज्यादा होंगे। For example, calcium might have 20 protons but 21 electrons। जैसे कैल्शियम क्लोरीन है। अब क्लोरीन की एग्जांपल, हम दोनों की एग्जांपल लेते हैं, कैटायन की एग्जांपल। लेट्स से Na+1। Na+1 इज अ कैटायन। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द प्रोटॉन, सॉरी लेस देन, वो क्या होते हैं? 10, बिकॉज इट हैज अ +1 चार्ज एंड इट हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। अगर एक एनाइन की एग्जांपल लें, हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन -1। इसमें जो प्रोटॉन्स वुड बी लेस देन द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने गेन किया है। प्रोटॉन्स ऑफ क्लोरीन आर 17, whereas the electrons after gaining one electron become 18। तो यहाँ पे electrons are greater than the proton। An atom or ion is said to be isoelectronic if they have the same number of electrons, isotonic if they have the same number of neutrons, and isotopic if they have the same number of protons। तो ये भी तीन terms हैं, याद रखनी। Isoelectronic and isotopic has been asked in the examination as well।